problems. We will just revise what we did in the last session. Okay. So I hope you remember what is the period. So period is nothing but what it is a number when we add to the function, we are going to get the same value of the function. Like if we have f of x plus t, and if you are getting it is equal to f of x, and if it is true for all x, then this t is called as a period, right? I hope you remember. In fact, this is also called as a fundamental period. Okay. Then you remember that if the period of fx is t, then what is the period of f of ax? What is the period of f of ax? T by A. Is t by a. Very good. So the period of f of ax is t by a. And also we have discussed the period of sine, cos, cosec, sec, tan, cot. Okay. Also we have seen tan 3x, sine 5x and all. That also you can find out. Okay. दीदी नाक्का वाडेगावला जायलाय मम्मी शेतात गेलेली आहे Someone mic is on. बाहेर आहे का कोणाची माझीच आहे फक्त घरी Okay. Everyone, please mute your mic. Okay. So we have seen this thing. Also, we have seen what is even function and odd function. So even means what? If you have f of minus x is equal to f of x, then it is even. And if you have suppose f of minus x is equal to minus f of x, then it is odd. Okay. That also we have seen last time. And the main thing after this, we have seen the formula. So how we write down? Do you remember what is the formula for f of x? I use how to write down the Fourier series of the function. Do you remember? Is it a naught by 2 plus summation n goes from 1 to infinity a n cos of n by x plus bn sin by x by L okay. So this is the main formula, and here when we write down this formula, we are writing the interval as c comma c plus 2. So this is a periodic function whose period is 2l. Okay. So for any function, if that function satisfies the Dirichlet conditions, then we can write down the Fourier series like this. That fx is equal to a naught by 2 plus summation n goes from 1 to infinity a n cos of. Remember that with a n always cos is there, and with b n always sine will be there. Okay. So a n cos of n by x by l plus b n sine of n by x by l. Okay. This is just a formula, but to write down actual Fourier series, what you need is the Fourier coefficients that are nothing but a naught, a n, and b n. Do you remember the formula for a naught? Is it something like 1 upon L? integration c to c plus 2 now Right. a plus 2 dot dx. Right. Correct. Yes. So remember, this we are going to always write down the whatever interval you are having, c comma c plus 2l. That will be your lower limit. This will be your lower limit. That is the lower end of the interval, and the upper end of the interval is your upper limit. Okay. So this is we are having for f a naught. It is 1 by L integration from c to c plus 2l f of x dx. Now, so the formula for a n is exactly same. It will be 1 upon L c to c plus 2l. And remember, as I told you, a n के साथ कौन होता है? Cos होता है. So we are going to have fx, whatever function you are having, into cos of n pi x by n pi x on l p of x. Right, correct. And what about bn? Bn will look like same, only instead of cos, we have to replace it by sine. Sine.
L की वैल्यूज क्या होती है? Yeah, I will tell you everything. So here just now that L is simply a number. It may be a pi, it may be one, it may be two, it may be anything. It may be negative, positive. So there is no restriction on L. Okay. So L is some, we can say it is a number. Okay. But according to the problem, according to the interval, we are going to get the value of L. Okay. Let us see one example so that the problem of L will be more clear to you all. So this is just a revision. Now, should we start with the examples? I hope this Yes, sir. formula is. Yes. So basically, listen. Remember here, these formulas are important. Okay, these are called as what? These are called as Fourier coefficients. Okay. So while solving the problem, while solving the MCQ also, what they are going to ask you, they'll ask you to find out A naught, A N, and B N. Okay. So generally this A naught will ask for 1 mark, and this A naught and AN and BN will ask for 2 marks in MCQ. Okay. Okay. That remind me. Today we are going to have a test, right? I hope you remember. याद है ना सबको? Today we are going to have a test at 4 o'clock, I guess. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes. Yes, sir. All the best, everyone. Now and remember that test will be on Microsoft Teams. It is not on Google Form. Okay. So you need to need your Microsoft login there, might be while starting the um, test. Okay, so it will not be on a Google form. You can give that test exactly once. Okay, so you cannot put it your duplicate number and anything. Okay, so be careful. You can give the exam only once. So you be ready with your Microsoft Team user and username and password. Okay. Sir, it will have half hour. Yeah, 4 to 4:30. There will be 15 questions. All 15 questions you are supposed to solve. Each question carry 2 marks, so 30 marks will be there. Okay. Problem will be there from mean value theorem, indeterminate form, Taylor-Maclaurin theorem. Okay. Most of the problems, in fact, all the problems already there in the assignment. So if you have solved that assignment, अगर आपने assignment solve किया है ठीक से, at least some part maybe you have not done that, but all questions will be from the assignment. Okay, so अगर आपने किया होगा, so it will definitely get the benefit of it. Sir, I sent assignment on your WhatsApp, sir. Okay. I sent assignment on your WhatsApp personally. No. You have to put it in the Google form. Google Classroom. I told you, na, you have to submit your assignment on the Google Classroom. That is the first thing. Remember, I think I have not put the answers of the indeterminate form. Today I put that answers also. You can check your Yes, sir. check your. आपने भेजा हाँ, yes, sir. या गूगल क्लासरूम पे मैंने वो भी भेज दिया है. If you want to check your answer, you can check out. Okay. Should we start with the problems of Fourier series? Yes, sir. Yeah. Now be careful. This is the first question. First question is very important. And if you understood this one, the thing will be very easy. Okay. So don't write down anything. Don't do anything. Okay. Fully concentrate here. Keep your pen down. Close your notebook and see here. Okay. Don't do anything. Listen here. We are going to need some integration also over here. I hope you remember last time I told you one formula. If you remember, एक formula बताया था मैंने. Bernoulli's U into VDA, the important one. Do you remember it? Yes, sir. The first term that you're supposed to remember. The first term is U into V1. Okay, and then keep on putting plus minus sign. So the next term will be minus U dash V2. And the next term will be Plus. U double dash V3 and so on. Plus minus plus minus. Right? Just keep in mind that U is nothing but your polynomial. Okay, it's an algebraic term. And what is V? V can be exponential or it can be trigonometric. Yeah, now listen here. We'll start with the बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है सर किसी का तो. आवाज आ रहा है? हाँ. Yes, sir. Yeah.
I'm muting everyone now. Okay. Now is it fine? Is it okay now? sir, is it? आवाज आ रहा है अभी भी? Coming, yeah. हाँ, आ रहा है सर. आ रहा है अभी? आ रहा है सर. हाँ, आ रहा है सर. मुझे तो नहीं आ रहा. बहुत आ रहा है सर. 866 mic is on. दूसरा तर बोलो. तुमचं नाही येते कोणाचं जर दुसऱ्याचा माईक चालू नहीं रे. Sir, roll number 866 from Chrome division mic is on. 866. No, it's not. मेरा तो ऑफ है ना ब्रो. तर सगळ्यांना म्यूट I did it. I muted everyone. Should I disable mic of all? But you can't speak in that case. In that case. Okay, I do mute. बॅकग्राऊंड व्हॉइस सर येतोच आहे आवाज आणखी. सर आवाज तुमच्या तिथून येतो. मेरे से मेरा ही आ रहा है क्या शायद? वही तो किसी का सब. I'm doubtful then. What should I do? हेलो. सर अभी आ रहा है क्या? काम हुआ कि नहीं? यस हुआ सर. Okay, so let us start with the problem. Find the Fourier series. Expansion. अरे यार, mic mute करो please everyone. Whose mic is on? Okay, now listen here. Now, first of all, try to understand what are the things given in the problem. So, can you tell me what is the function here? Function क्या दिया है आपको? F of x is equal to Is it pi square minus x square is your function? Okay, ये आपका function, right? Can you tell me what is the interval here? कहाँ से कहाँ तक जा x value ले सकते हैं? 0 to 0 to 360. Yeah. So yeah. So ये this is your interval. समझ में आया सबको? 0 से start हो रहा है and 2 pi तक value लेने वाला है. Okay. So your interval is from 0 to 2 pi and both are including, so it will be a closed interval. Okay. Fine with the interval, everyone? sir. Yeah. Can you tell me what is the meaning of this? ये क्या बताया उन्होंने? क्या दिया है ये? Period is 2 pi. Yes, correct. Very good. So this is just for the information that f of x plus 2 pi is equal to f of x. Means ये जो 2 pi है is a period बस. इतना इसका मतलब है. Okay. बाकी इसका कोई use नहीं करने वाले. X plus 2 pi is equal to f of x. We are not going to use it anyway. Okay. But what is the significance of that? The significance is what? That indicates that this function is periodic and with the period 2 pi. Okay. Fine. Okay. Now remember, you are having the question in your mind that what is that L, how to identify it. Now here it will be clear. Now see, we are going to identify that L by comparing the given interval with
c कॉमा c प्लस 2n। तो मैंने आपको इंटरवल बताया था c कॉमा c प्लस 2n। अगर इस इंटरवल को आप इस 0, 2 के साथ कंपेयर करोगे, कैन आई से फ्रॉम दिस व्हाट इज माय c? 0. c will be 0, very good। so c will be 0 and can I say c plus 2l is equal to 2 pi, 2 pi. right? Out of that ये c तो 0 है आपका, that means 2l is equal to 2 pi। can I say from that then l is equal to pi? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया सबको? No doubt, everything is clear। sir. Yes, sir. Yes, sir. That's it, that's it। so this is the main idea to remember। कोई भी प्रॉब्लम हो, वॉट एवर मे बी द प्रॉब्लम, फूरियर सीरीज का प्रॉब्लम अगर होगा फुल रेंज का, देन इन दैट केस जो कोई भी इंटरवल दी जाएगी आपको, वॉट एवर मे बी द इंटरवल, यू हैव टू कंपेयर इट विद c comma c plus 2l। when you compare it with the c comma c plus 2l, you will get the value of c and you will get the value of l। okay, so here your c value is 0 and your l value is pi। okay, and accordingly we are going to replace everywhere the value of l as pi। okay, तो इस हर जगह हम l की वैल्यू pi पुट करने वाले। okay, now we want to find out the Fourier series। हमें Fourier series find out करनी है, right? so to find out the Fourier series, what you need a naught, you need an and you need bn। so first of all you will start with a naught and last में हम Fourier series लिखेंगे। do you remember the formula for a naught? 1 upon L integral. Yeah, Upon so L इसका integration of so yeah, remember it is 1 Yes. upon l, but what is your l? pi. Pi. तो ये हो जाएगा pi। okay, right? Yes, sir. and what will be the interval integration is from what 0 to 2 पर 0 ये to 2 pi. yeah, it will be 0 from to 2 0। pi. इंटरवल लिखने हैं यहाँ पे, हमेशा याद रखो। ओके, एंड किसका इंटीग्रेशन लेना है? fx का। तो व्हाट इज माय fx? fx इज pi Pi square। square minus Pi square minus x square. यस, pi square minus x square। एक मिनट, हेलो, इज इट क्लियर अप टू दिस एवरीवन? Yes, sir. या अभी बस कुछ नहीं करना है इसको, खाली इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 1/pi, दैट्स इट। मैं बाहर वैसे ही रखता हूँ। नाउ पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज, आई होप ऑल ऑफ यू नो, इट इज k into x, जिससे इंटीग्रेट करें। kt हो, k dt होगा तो kt आ जाता है। सर ओके, बॅकग्राऊंड आवाज खूप जास्त येतोय सर। कशाचा आवाज? एक मिनिट, एक मिनिट। हेलो, ये आवाज आ रहा है क्या ठीक से? नहीं नहीं सर। तो ऐसा हेलो, आ रहा है क्या अभी आवाज? सर अभी yes sir. हाँ, आला सर। ओके, ठीक है। अभी ध्यान दो, लिसन हियर। पाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बता सकते हो फिर? pi square x इज इट पाई स्क्वायर एक्स? बिकॉज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है, माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n? x रेज टू n का x इंटीग्रेशन cube by 3 x raised to n plus 1 upon n plus 1 1 upon n plus 1 होता है, राइट? n plus so 1 will it be x cube by 3? is that clear everyone? yes sir. okay, and उसके बाद यहाँ पे हमें लिमिट पुट करना है। दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम? डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट डालते हैं पहले। तो ध्यान दो, हाउ टू पुट द अपर लिमिट। तो ये जो फंक्शन है, ये जो आंसर मिला है हमें, उसमें हमें क्या करना है? x के जगह, ध्यान दो, x के जगह 2 पाई डालना है। तो ये कैसे दिखेगा? पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपका अपर लिमिट। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया? अपर लिमिट पुट किया। आर यू गेटिंग एवरीवन? काय केलं कळालं का? इथे x च्या ठिकाणी 2 पाय टाकला। हो सर।
that 2 pi is called as the upper limit. We are substituting the upper limit. Now minus, ये फर्स्ट एग्जाम्पल इसलिए मैं सब बता रहा हूँ आपको. अभी क्या करना है, लोअर लिमिट डालना है. लोअर लिमिट क्या है, 0. तो ये कैसे पुट करोगे, पाई जीरो आएगा. स्क्वायर इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब इंटू 3 अपॉन 3. कळालं का सगळ्यांना? हो सर. हो सर. बस अब इसको हो, हो, सिंप्लीफाई कर दो, दैट्स इट. इट विल बी 1 अपॉन पाई एंड ये क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बी 2 पाई क्यूब. व्हाट इज दिस, 8 दिस pi विल cube. बी 8 पाई क्यूब बाय 3 एंड द सेकंड पार्ट इज 0. ये तो 0 बनने वाला है आपका, तो डोंट वरी अबाउट दिस टर्म विल बी 0. ओके, so simplify this one. So what you are going to get, is it 1 upon pi, and if you cross multiply, are you going to get 6 pi cube minus 8 pi cube divided by 3. So can I say it will be 1 upon pi into, is it minus 2 pi cube by 3? Is it correct? तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, देखो वहां पे एक पाई कैंसिल हो माइनस 2 जाएगा ना. पाई स्क्वायर बाय. तो कैन आई से इट इज minus 2 pi square by 3. This will be by a naught. Are you getting everyone? Yes, sir. समझ में आया? इजी है ना, कुछ नहीं है. इंटीग्रेशन भी इजी है, देखो कुछ नहीं, बस आपको एक कांस्टेंट वाला इंटीग्रेशन किया और एक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब था ये स्क्वायर था, हाँ एक्स क्यूब वाला इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन. क्लियर एवरीवन? ए नॉट समझ में आया सबको? यस सर. सर ये आपको 2 मार्क्स देने वाला एमसीक्यू में. ओके, तो जनरली ए नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ए नॉट पूछते हैं. ओके, चलो राइट डाउन एवरीवन, ये लिख लो, फिर हम ए एन करेंगे. Any doubt in this to anyone? हॅलो सर. हाँ बोलो. सर एक्झाम 5च्या नंतर ठेवली तर चालेल का? काय काय? एक्झाम हाँ 5च्या नंतर ठेवली तर चालेल का? कारण सकाळपासून मोबाईलवर लेक्चर चालू राहतो. तुमचं 3:30 पर्यंतच लेक्चर असतं ना? हा 3:30 पर्यंत असतं, पण सर गॅप फक्त अर्ध्या तासाचा आहे. हा, मी तुम्हाला 4 दिवस आधी सांगितलंय, अर्ध्या तासात किती अभ्यास होणार आहे? आणि अभ्यासाचंच नाही सर, दिवसभर मोबाईल दाब, त्याच्यामुळे चिडचिडपणा येतो. चिड़चिड़पना है तो. नाही सर, राहू दे. अरे वो सेट किया है अभी, उसका टाइमिंग वगैरह अरे सेट अर्ध्या किया है. तासाने कुठे चिडचिड पाणी येणार आहे तेव्हा. तो आता काल सुट्टी होती ना, चिडचिडपणा कमी झाला असेल ना तुझा जरा. जिल्हा लावायचं 3:30ला. नाही करेक्ट आहे, बरोबर आहे. आधी बोलला असतं तर केलं असतं, पण आता अरे ती सेट केली आहे एक्झाम, तो बेअर फॉर दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम आपण थोडं चेंज करू टाइमिंग. ओके, तर ते मायक्रोसॉफ्ट टीम्स वर कशी द्यायची ते नाही माहिती काय. कारण सेम काय गुगल कधी क्लासरूम सारखीच द्यायची, बाकी काही नाही. तसेच लिंकला क्लिक करायचं, सेम तसंच असतं, काही वेगळं नाही. फक्त याचा फायदा काय की बाहेरचं वगैरे कोणी एक्झाम देऊ शकत नाही, जे आपल्या इन्स्टिट्यूट मधले आहेत तेवढीच मुलं देऊ शकतात, बाकी सगळं सेम. चलो राइट डाउन दिस फास्ट. सर तुम्ही लिंक सेंड करणार का टेस्टची व्हॉट्सअपवर? व्हॉट्सअपला लिंक येईल तुम्हाला 4 वाजता डॉट. हो सर. सर एकदा पुन्हा रिपीट करा ना. सर एकदा परत रिपीट करा. एन सांगतो तेव्हा कळेल तुम्हाला, ए नॉट एन सारखाच आहे.
Finish everyone? Done? Yes, sir. Yes, sir. Now we are going to see this is about A naught. I think L is clear to everyone. L कळाला ना सगळ्यांना कसा काढायचा आहे L? Yes, sir. L के लिए कंपेयर करना है आपको C, C प्लस 2L के साथ. तो C वैल्यू हो जाएगी 0 और C प्लस 2L हो जाएगा 2 पाई. तो C तो 0 है तो 2L इज इक्वल टू 2 पाई हो गया. दैट मीन्स L हो गया आपका पाई. ओके. उसके बाद फॉर्मूला है A नॉट का. A नॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1/L, बट L की जगह हमने पाई डाल दिया 0 to 2 पाई. दैट इज C, C प्लस 2L. मीन्स ये इंटरवल पुट करनी है इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 2 पाई. एंड देन फंक्शन पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके. और फिर इसका इंटीग्रेशन. Now listen, AN is important. Okay, AN BN में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. All of you listen it carefully. ध्यान दो ठीक से. Can anyone tell me the formula for AN? 1/L. 1/L. 1/L होता है, बट L क्या है अभी? पाई. एंड इंटीग्रल क्या है हमारी? 0 to 2 पाई. तो ये 0 to 2 पाई जाएगा. इनटू fx 0 होता to है. 2. तो व्हाट इज माय fx? पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. करेक्ट. इंटू कॉस आएगा ना यहाँ पे. इंटू कॉस ऑफ n पाई x by L. But L is what? L is pi. Are you getting everyone? Yes, sir. But ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा देखो, बिकॉज L एंड पाई सेम है ना अभी. राइट. तो ये फॉर्मूला सिंपली कैसे दिखेगा हमारा an? इट विल बी 1/pi 0 to 2 pi square minus x square into cos of nx. Are you getting this one everyone? Yes, sir. Yes, sir. अभी ध्यान दो, मैंने एक फॉर्मूला बोला था आपको इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी वाला. ये वाला फॉर्मूला अभी हमें यूज करना है. ओके. कैन यू टेल मी इसमें व्हाट शुड बी माय u एंड व्हाट शुड बी माय v? Pi square will be U. पाई स्क्वायर माइनस Pi square minus x square will be your u is U. is cos. cos nx is equal to v. तो याद रखो ये जो u होता है, हाउ टू टेक दैट u, जिसका डेरिवेटिव 0 बन जाता है आफ्टर सम टेकिंग द डेरिवेटिव. ओके. इट इज वैनिशिंग मींस व्हाट? उसका डेरिवेटिव 0 बनने वाला है. दैट टर्म विल बी योर v. ओके, सॉरी, दैट टर्म विल बी योर u. तो रिमेंबर u is always a polynomial. Okay, and here the polynomial is pi square minus x square. So your u will be pi square minus x square and your v will be cos nx. Okay, so by using that formula, can you tell me how the integration will look like? It will be 1/pi. ध्यान दो अभी, listen here everyone. पहले हम u जो है वो as it is रखेंगे. तो पहली टर्म होगी आपकी पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बी केयरफुल, आपको सभी टर्म ध्यान दो, इंटीग्रेशन करते वक्त सभी टर्म ब्रैकेट में लिखो. मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ देखो, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू cos nx का इंटीग्रेशन लेना है आपको. व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ cos nx? Sin x upon n. इट विल बी sin nx अपॉन n. वो nx का डेरिवेटिव निकाल के हम नीचे लिखते हैं, तो cos sin nx अपॉन n माइनस नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव ना u डैश, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पाई स्क्वायर का तो 0 बन जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x. आर यू गेटिंग? Yes, sir. राइट. आफ्टर दिस व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन. नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस nx अपॉन माइनस कॉस और एक n आ जाएगा ना, N और square. ऑलरेडी एक n है, n square. इथे ऑलरेडी एक n होता ना, और एक n आ गया तो इट विल बी n स्क्वायर. इज इट ओके? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी प्लस, और इसका डेरिवेटिव, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2. -2. और इसका -2. इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन nx अपॉन n. माइनस साइन nx और अपॉन एक n n आ square. जाएगा. आर यू गेटिंग? आई होप इट इज क्लियर. सिंपल है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. बस अभी इसके आगे वाले डेरिवेटिव 0 बनने वाला है. इसका डेरिवेटिव
तो शुड आई राइट डाउन दैट? नो, बिकॉज आगे वाले सभी टर्म जीरो बन जाएंगे, इतने डेरिवेटिव एग्जिस्ट होंगे ना इसके। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes. में आया क्या? Yeah. देखो मैंने क्या लिखा है, ये मेरा u है, दिस इज माई u, दिस इज माई v1, देन माइनस ये मेरा है u डैश, ये है मेरा v2, फिर ये क्या है प्लस, ये है मेरा u डबल डैश, और ये है मेरा v3। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस सर। फाइन। अभी ध्यान दो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ये जो लिमिट्स पुट करने हैं, अभी लिमिट्स पुट करने मींस व्हाट, x के जगह 2 पाई डालना है आपको, पहले अपर लिमिट पुट करना है आपको, एंड बाद में माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ओके, चलो ध्यान दो, मैं अभी पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं आराम से करने वाला हूँ। ये 1/पाई, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे 2 पाई डाल दो, ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी मेरी साइन। आर यू गेटिंग मी? यस x सर। 2 पाई डाल रहा हूँ। इसे देखिएगा, ये इज इट ओके? ये मैंने क्या किया, अभी तो मैं खाली अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने, ये अपर लिमिट हुआ ना। यस अपर सर। लिमिट माइनस क्या करते हैं हम? लोअर लिमिट। लिमिट। माइनस लोअर लिमिट करना बाकी है हमारा। तो लोअर लिमिट में क्या आएगा देखो, 0। पाई स्क्वायर माइनस 0 होगा, X. इंटू साइन 0 होगा, माइनस 2 इंटू 0 होगा, माइनस कॉस ऑफ 0 होगा, प्लस माइनस 2 इंटू यहाँ पे माइनस साइन 0 होगा। आर यू सेकंड गेटिंग? ब्रॅकेट में सब 0 आएगा ना। समजलं का सगळ्यांना? हे अपर लिमिट माइनस करते हैं हमेशा लोअर। इज इट ओके? ओके, अभी ध्यान दो, लिसन, बी केयरफुल हियर। आपको कौन कौन से टर्म जीरो हो रहे हैं वो चेक करने, ध्यान दो। डू यू नो साइन पाई कितना होता है? साइन पाई -1 0. साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो होता है, 0 सर साइन 0 0 पाई जीरो होता है, साइन इनफैक्ट Zero. साइन एन पाई, साइन को कितने भी पाई लगाओ वो हमेशा जीरो ही होने वाला है। एन पाई लगाओ यो या 2 एन पाई लगाओ, उसका आंसर क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो कैन आई से दिस टर्म विल बी जीरो? कैन आई ऑल्सो से दिस टर्म इज ऑल्सो जीरो? Yes, sir. कैन आई से ये पूरी टर्म ही जीरो आने वाली है? ये जीरो होगा, ये देखो ये जीरो बना देगा, ये कॉस जीरो नहीं होगा बट ये टर्म जीरो बना देगा, और ये भी टर्म जीरो। लोअर लिमिट तो सभी टर्म जीरो हो गए। आर यू गेटिंग मी? Sir. यस सर। यस सर। राइट। अभी क्या बचेगा देखो आपके पास, ये 1/पाई तो है बाहर का, ये टर्म क्या होगी? कैन यू टेल मी? पाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई। तो इज इट -3 पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर? 2 pi by 4. इज इट -3 पाई स्क्वायर? यस सर। यस सर। माइनस, तो ये तो जीरो बन गई। ये वाली टर्म क्या होगी? कैन यू टेल मी? -4 पाई ना, Yes, sir. और ये माइनस साइन है, प्लस 4 तो कैन आई राइट डाउन हियर? ओके, ये रखता हूँ मैं -4 पाई, -6 pi. राइट। व्हाट अबाउट दिस cos ऑफ 2n पाई कितना होता है? कैन यू व्हाट इज cos ऑफ पाई? -1 होता है। cos ऑफ 2 पाई -1 +1 होता है। cos ऑफ 1 3 पाई 1 होता है सर cos Plus of 4 minus पाई। minus. दैट मींस लिसन, cos पाई अगर ऑड होगा माइनस ना, पाई प्लस 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई तो -1 आएगा, और अगर 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई आया तो वो +1 आएगा। अभी यहाँ पे देखो, ये 2 का मल्टीपल है ना, 2n पाई है ये, राइट। सो कैन यू टेल मी ये +1 आएगा या -1 आएगा? +1 +1 आएगा, बिकॉज ये इवन है ना, Plus 1. बिकॉज इवन के केस It में is वो even number. तो कैन आई से इट विल बी -1 बाय n स्क्वायर? ये माइनस साइन, ये -1 Yes. नहीं आया, ये माइनस साइन यस है, सर +1 नहीं आया वो। इज इट ओके? यस यस सर। यस
और बाकी सभी टर्म तो Yes. जीरो बन गए, इतना ही बचा देखो हमारे पास, ये सभी टर्म, ये यही टर्म है ना, ये एक सर टर्म -3 स्क्वायर, हेलो सर -3 माइनस स्क्वायर थ्री इंटू पाई जीरो है ना, स्क्वायर जीरो है ना, तो इंटू हाँ इंटू मल्टीप्लाई बाय जीरो है ना, पहली वो टर्म जीरो है ओह ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये टर्म भी नहीं आएगी, वेरी गुड, ये Yes, टर्म भी sir. नहीं आएगी, सॉरी या, बिकॉज ये कुछ भी हो रहने दो, बट ये इंटू जीरो है ना, या करेक्ट करेक्ट, ये जीरो बनने वाली है, राइट, थैंक यू। सो व्हाट आई लेफ्ट विथ, क्या बचेगा मेरे पास, तो एम आई गोइंग टू हैव ओनली 1/पाई इंटू माइनस माइनस माइनस, तो कहने से -4 पाई बाय स्क्वायर, इज इट ओके, ये Yes. पाई Yes, कैंसिल sir. कर देते हैं, Yes, sir. Pi get cancelled. तो व्हाट विल बी माय आंसर फाइनली, -4 upon n -4 square. करेक्ट, दैट इज माय an। You might be thinking यार ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है सर, 2 मार्क को आएगा क्या, यस इट इज, इट विल सर कम वो टू, -1 अपन स्क्वायर कहाँ से है सर? कौन सा वाला, ये 1 बाय पाई 0 माइनस माइनस ऑफ माइनस पाई -1 अपन एन अरे ये टर्म जो लास्ट सेकंड। रेड कलर में सभी जीरो बना दिए वो समझ में आया ना आपको, ये टर्म जीरो हो हाँ गई, वो ये टर्म भी जीरो हो गई पूरी, ये तो पूरा ही टर्म जीरो हो गया, एक ही टर्म बचा है इतना ही, ये टर्म एक्चुअली ये यहाँ पे लिख दिया मैंने जीरो, ये टर्म क्या है देखो, ये माइनस साइन दिखी क्या, माइनस साइन, ये Yes, sir. -4 पाई, ये -4 पाई, और cos ऑफ n पाई 1 होता है ना, इट विल बी -1 बाय n स्क्वायर, आर यू गेटिंग, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो, थोड़ा कंसंट्रेट करो इस पे, डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा कंसंट्रेशन से करना पड़ता है बस, बाकी कुछ नहीं है। सर ए नॉट आणि n चा फॉर्म्युला सेमच असतो का 1 upon l? 1/L, पण आतमध्ये हो, चेंज होतो ना, एफ एक्स इंटू कॉस येतो ना, cos x. हो, नाही ते मला फक्त आधीची टर्म विचारायची होती. 1/L सेम असतो, हो हो. तो आपण ए नॉट मध्ये फक्त एफ एक्स असतो, इन ए एन वी आर टू एफ एक्स इंटू कॉस एन पाय एक्स बाय एल, येस सर. सर ओवर गया ना. अरे वो ऊपर तो ए नॉट है, वो हो गया ना, So the minus डन 2 ना, pi is cube will no? तर ते a नॉट मध्ये लास्टला -2 pi क्यूब येईल ना, क्या क्या, a नॉट में सर. हाँ हाँ वो एक पाई कैंसिल हो गया ना, सर एकदा क्वेश्चन दाखवा ना. ओके सर झालं. डन,
और अगर आपको an समझ में आए तो bn भी इजीली आ जाएगा। Should I go सर with the इसके बी एन बी निकालना है ना? हाँ, तीनों निकालने पड़ते हैं, a नॉट, an एंड b। सर 1 मिनिट थांबा. एमसीक्यू में तीनों नहीं पूछेंगे आपको, एमसीक्यू में आइदर ए नॉट पूछेंगे या an पूछेंगे या bn पूछेंगे, तीनों में से कुछ एक। और आपको सभी आना चाहिए, ए नॉट भी आना चाहिए, an भी आना चाहिए, bn भी आना चाहिए। Done with this everyone? सर थांबा. No, sir. Yes, sir. ये याद रखो, चाहिए तो लिख के रखो, साइन ऑफ 2n पाई 0 होता है एंड कॉस ऑफ 2n पाई 1 होगा। इवन नंबर आया ना तो 1 आएगा, अदरवाइज -1। लका पहिलं युनिट झालं ना सगळ्यांचा अभ्यास? पढ़ाई की क्या नहीं फर्स्ट यूनिट की? यस सर। यस सर। गूगल क्लासरूम सबने ज्वाइन किया है ना? हाँ सर। Yes, sir. चलो, शुड आई स्टार्ट विद bn? यस सर। डन एवरीवन? यस सर। ध्यान दो, all of you listen here carefully. Now we want to find out bn. Okay, can you tell me what is the formula for bn? 1/pi 1/n. 1 pi, very good. 1 upon L. integration 0 to 2 pi Correct. pi square minus x into sin n pi x upon pi dx. It will be sine of n pi x by l. Okay, but what is my l? Pi. pi. Will it look like this? ऐसे दिखेगा ना ये, बट ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हाउ इट लुक लाइक, ये कैसे दिखेगा bn आपका? 1 upon pi integration 0 to 2 pi 0 to 2 pi 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 square square minus x square into sine sin of nx dx. it's okay. बस अभी same formula, same way we have to do. Can you tell me what is u and what is v? What is u? Pi square minus x square is u. Yeah, correct. So pi square minus x square is your u, and what is my v? V will be Sin Sin nx. Then again use the Bernoulli's rule to find out the integration of this thing. Okay, how to get the integration? This 1 upon pi will be as it is. Can you tell me what is the first term? pi square minus x square Correct. Pi square into minus x square. Put in the bracket. लक्षात ठेवा bracket मध्ये लिहायचे सगळे integration derivative. तो pi square minus x square into minus cos nx upon n. minus cos of nx upon n. Next term क्या होगी? Minus. minus 2x. Minus 2x. Minus of minus 2x, right? Into bracket. इसका integration. Will it be minus sin Minus sin Minus nx n upon n square. upon n square? Right? What is the next term? Will it be minus 2? Plus Cos of Cos nx upon n cube. Right. Cos of nx upon n. Okay, that's it. And then remaining all terms will be 0.
Is it okay? Is it like this? Sir. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आपको 2 पाई पुट करना है, ध्यान दो. तो कैन यू टेल मी 2 पाई पुट करने के बाद कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी? मैं लिखता ही नहीं वो टर्म, साइन वाली या कॉस वाली? माइनस साइन साइन वाले या, Sin तो ये देखो, तो ये माइनस टर्म जो है व्हेन यू पुट 2 पाई sin 2 n पाई जीरो बनने वाला है ना, तो ये टर्म तो जीरो ही बनने वाली है मेरी. तो शुड आई राइट डाउन दिस 1 अपॉन पाई? ओके, आई एम पुटिंग हियर नाउ अपर लिमिट. मैं पहले अपर लिमिट डाल रहा हूँ. तो हाउ इट लुक लाइक? पाई स्क्वायर माइनस माइनस 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर ना, into, can you Yes, tell sir. me when you put 2 pi here, इसकी cos of 2n pi कितना होगा? 1 1. और ये माइनस साइन है ना, तो कैन आई से इट विल बी माइनस 1 by n? इज इट? Yes, sir. yes sir ये वाली Yes, टर्म sir. तो जीरो बन गई, ये तो मैं लिखने ही नहीं वाला हूँ. लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म विल बी -2 होगी. देखो -2, और वापस यहाँ पे 1 डालोगे ना, तो इज इट 1 upon n क्यूब? यस सर. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, माइनस. अभी लोअर लिमिट भी है, अभी लोअर लिमिट में भी कुछ टर्म जीरो बनने वाले. कौन कौन सी टर्म जीरो होगी? देखो, ध्यान दो. ये टर्म जीरो नहीं बनेगी, ये टर्म जीरो होने वाली है. देखो, राइट, साइन वाली. ये टर्म जीरो बनेगी क्या? नहीं बनेगी. ये भी टर्म, ये टर्म क्या आएगी? अभी जीरो में ऐसी लाइन मत सोचो कि जीरो हमेशा जीरो देने वाला है. ये टर्म क्या हो जाएगी? देखो, ये टर्म आपकी होगी पाई स्क्वायर माइनस जीरो ना, विल इट बी पाई स्क्वायर इनटू क्या? -1 by n. -1 by n ओके, मिडल वाली टर्म तो जीरो बन जाएगी, साइन भी जीरो बना देगा, ये टर्म भी जीरो बना देगी, तो वो अल्टीमेटली वो जीरो बनने वाली है. और लास्ट टर्म क्या होगी आपकी? लास्ट टर्म -2 upon n cube -2 1 upon n क्यूब. इज इट करेक्ट? ये होगा आपका लोअर लिमिट. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अपर एंड लोअर लिमिट सर ये डाल. वाली स्टेप फिर से रिपीट करो ना. यहाँ पे क्या किया? पहले 2 पाई डाला. 2 पाई जहां जहां x है ना, जिथे जिथे x है, इथे इथे इथे, एवरीवेयर आई एम पुटिंग 2 पाई. बट मुझे मालूम है कि cos ऑफ 2n पाई 1 होता है और sin ऑफ 2n पाई 0 होता है, तो ये टर्म 0 होने वाली है पूरी, वो लिखी नहीं मैंने. बट यहाँ पे मैंने 2 पाई डाला तो क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर हो गया ना, वो लिख दिया यहाँ पे. और इसकी वैल्यू cos ऑफ 2n पाई की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए 1 लिख दिया उसमें. यहाँ पे देखो 1 by n. इज ओके? फिर क्या किया? ये Yes, तो sir. टर्म लिखी नहीं मैंने. लास्ट टर्म वापस ये 1 होने वाला है, तो 1 upon n क्यूब लिख दिया, बस. दैट्स इट. और फिर जीरो जब डाला मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, जब जीरो डालूंगा तो cos 0 1 होने वाला है, ये वापस -1 by 1 n हो गया. और ये पाई स्क्वायर माइनस जीरो ना, तो पाई स्क्वायर, ये टर्म वापस जीरो बन जाएगी, और ये टर्म 1 by n क्यूब, तो 1 by n क्यूब. इज इट ओके? Yes, sir. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, तो इसको क्या होगा? ये देखो, 1 upon पाई होगा ये. शुड आई टेक हियर? ये यहाँ पे देखो, ये टर्म जो है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में -1 by n कॉमन है. देखो, शुड आई टेक -1 by n कॉमन देयर? तो अगर मैं -1 by n कॉमन लूंगा तो ये मिलेगा मुझे पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये वाला लिया मैंने. और यहाँ पे क्या है? उसका कोएफिशिएंट माइनस पाई स्क्वायर है ना. इज इट ओके? काय के लिए करा रखा है? ही टर्म कॉमन काट ली हुई, -1 by n. और फिर उसके अंदर क्या बच गया? ये पाई स्क्वायर माइनस पाई 4 पाई स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर इधर लिख दिया, बस. ओके. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कॉमन? ये देखो, ये ये तो कैंसिल होने वाला है. देखो, ठीक है. 1 फिर upon n मैं ये cube क्या कर लेता हूँ? 1 upon n क्यूब कॉमन लेता हूँ. तो यहाँ पे देखो, इसका -2 है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे ये माइनस माइनस +2 होने वाला है. इज इट +2? तो ये जीरो Yes. ही होगा. देखो, ये टर्म जीरो होने वाली है. तो क्या आएगा फाइनल आंसर? 1 upon पाई -1 by n इंटू ये पाई स्क्वायर भी आंसर होगा.
तो वी आर लेफ्ट विद ओनली -4 और बाकी सभी टर्म 0 हो गए। तो ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, देखो ये बाहर वाला एक पाई। तो व्हाट इज माय आंसर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कैन आई से इट इज 4 पाई बाय n। इज इट? आ गया मेरा bn। आर यू गेटिंग दिस वन? Yes, sir. राइट नाउ। सर थोडं वर घ्या ना. सर स्क्रीन थोडी वर घ्या ना. सर स्क्रीन झूम इन करा ना. तो स्क्रीन वर घ्या. Please scroll the screen, sir. Sir. Done everyone? Yes, sir. Sir, झूम इन screen करा ना, वर. दिसत नव्हतं वर. Can you see the screen? Yes, sir. I'll take the attendance. Please listen here. 803 है क्या?